हेलो गाइस एंड वेलकम टू Kalinga IAS। तो पॉलिटी आम पुणी स्टार्ट करवा काल जो रखी थे से पॉलिटी स्टार्ट करवा। तो काली आम जनरली शेड्यूल्स खत्म सोर्स रु सारी सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट आज आम आरंभ करवा पार्ट एंड सब्जेक्ट व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स केटा आम टोटल पार्ट्स अच्छी और से पार्ट्स रे अलग अलग कौन कौन सब्जेक्ट मेंशन अच्छी ता विषय देखिबा। देन शेड्यूल कौन कौन अच्छी टोटल 12टा शेड्यूल अच्छी ता विषय में देखिबा। तो पार्ट टोटल पार्ट कितना अच्छी तो टोटल देयर इज 22 पार्ट्स। तो 22 पार्ट्स अच्छी तो 22 पार्ट्स रे प्रति पार्ट्स रे कौन कौन सब्जेक्ट मेंशन अच्छी सब्जेक्ट लिस्टेड अच्छी ता विषय देखिबा। एटा इंपोर्टेंट अच्छी रही छी जेंति पचार देबो पार्ट 2 रे कौन सब्जेक्ट लिस्टेड अच्छी तो पार्ट 3 रे कौन सब्जेक्ट लिस्टेड अच्छी बहुत एई बळे क्वेश्चन पचारि छी जेंति पार्ट्स एंड सब्जेक्ट्स एंड इट्स रिलेटेड आर्टिकल तार रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन मेंशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे जेंति टोटल 22 फर्स्ट पार्ट इज द यूनियन एंड द टेरिटरीज। यूनियन एंड टेरिटरीज और यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल कितना नंबर आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल आछी। सिमिलरली पार्ट 2 is based on the citizenship and it deals with article 5 to 11. Similarly part 3 is related to fundamental rights। तो बहुत सारे पचार सच्ची fundamental rights belongs to in which parts क्यों parts रे fundamental right आसुची ना fundamental rights belongs to in part 3 and article from 12 to 35 article रही छी सही बळिया। part 4 directive principle of state policy from article 36 to 51। Similarly the fundamental duties recently added हिची fundamental duties टा add हिची इटा starting of constitution रे तो थिला part 4 रे add हिची and article 51 ए रे टा add हिची starting रे टा constitution रो तो थिला। सोरेन सिंह कमिटी previous class में देखिले सोरेन सिंह कमिटी recommendation रे for a fundamental duties टा part रे add हिची। Similarly part 5 deals with the union and the executive जेंति president केमति हले prime minister कोन कोन केमति इलेक्शन होंती तांको manner of the election तो ये विषय डील करची द यूनियन and it deals with from the article 52 to 151। then later on part 6 deals with the states and similarly its article from 152 to 257। similarly various parts like part 7 the states, part 8 the union territories from article 239 to 242। so that is important। पंचायत पंचायत के पार्ट मेंशन है पार्ट 9 रे मेंशन अछि फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ ता एड हिची आर्टिकल 40 डीपीएसपी रे मेंशन अछि अबाउट द पंचायत एंड एडेड हिची थ्रू द 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 रे। तो ये टोटल आर्टिकल कितने अछि 243 रू 243 ओ। देन सिमिलरली पार्ट 9A municipality it also added through 74th constitutional amendment act in 1973। articles deals with 243p to 243zg। then cooperative society that is article part 9b। then schedule and tribal area similarly is the 22 part. just look into it। important part is like emergency in part 18 official language in part 17 official language article 343 then talk about the official language from 343 to 351। तो क्वेश्चन पचाची क्यों आर्टिकल टा मेंशन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343। then amendment of the constitution part 20 article 368। so these are the parts total 22 parts are there in our constitution which deals with various articles। next हमें देखिबा एबे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल हमर शेड्यूल केतना अछि टोटल हमर शेड्यूल 12 टा शेड्यूल रही छै हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे। एंती फर्स्ट सेकंड थर्ड एंती 12 टा शेड्यूल रही छै। एंती फर्स्ट शेड्यूल टॉक अबाउट द
name of the state and their territorial jurisdiction. Talk about the name of the state. State ro naam jemti India or Bharat. First article, article 1. Article 1 mention India, that is Bharat. So India, that is Bharat. So it is India विषय state विषय name of the states कौन states अच्छी. Then their territorial jurisdiction केते जाके तारा jurisdiction अच्छी, territory टा extent केते जाके अच्छी. Similarly, name of the union territories and their extent. Union territories और तारो extent कौन. This is talk about in first schedule. Similarly, in the second schedule, related to emoluments, allowance, privilege, and so on. कहाँ को कौन emolument मिलिबो, allowance मिलिबो, and privilege मिलिबो. So it is total 9 जन को विषय एठी मेंशन अछि. 9 जन का विषय मेंशन अछि. जंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांकर एनरोलमेंट कोन रहइबो, अलाउंस कोन रहइबो, प्रिविलेज कोन रहइबो. सेमती गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर, chairman and the deputy chairman of the legislative council and legislative assembly, then judge of supreme court and judge of high court. Lastly, controller, auditor general of India. Article 148. 148. So article schedule 2 talk about the enrollment, allowance and privilege based on different members like president, governor, speaker, chairman, judge and controller, auditor general. Then schedule 3. Schedule 3 similar setki jo achanti, but ethi deals with the oath and affirmation. Kon kiye kon oath nebe, kemiti oath nebe, to tanko bishoy ethi deal kara heichi. कहा प्रेजेंट से ऑथ निया जीवो किए कोन ऑथ नबो ता डील करा होची शेड्यूल 3 रे. एठी भी किए के अछंती टोटल 9 पार्ट्स आर देयर. दैट इज यूनियन मिनिस्टर कर ऑथ एंड इंफॉर्मेशन केमति रहइबो. देन कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट केमति रहइबे. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर कोन रहइबो. जज जेमति रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हेले तो से माने रिसेंटली किछि ऑथ नेशन, ऑथ एंड इंफॉर्मेशन डिफरेंट ऑथ नेचंती, शपथ नेचंती डिफरेंट पार्लियामेंट रे. तो तार डील करछि केठी ना शेड्यूल 3 रे डील करछि. सेमति जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रो ओथ कोन रहइबो, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जज ऑफ द हाई कोर्ट. देन इन फोर्थ एटा इंपोर्टेंट, एटी बहुत क्वेश्चन आछि. पार्ट शेड्यूल 4 डील्स विथ तो चतो एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा डील्स विथ इन व्हिच शेड्यूल, पार्ट ऑफ व्हिच शेड्यूल. एलोकेशन ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा रे जो डिफरेंट सीट्स एलोकेशन होछि अलग अलग स्टेट को केते हिसाब रे सीट एलोकेट हबो के हिसाब रे स्टेट माने तांको राज्यसभा रे मेंबरशिप पाइबे तो सेटा डील करछि इन द फोर्थ शेड्यूल. एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा रे सीट एलोकेट केमति हबो. सिमिलरली इन द फिफ्थ शेड्यूल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स रो एडमिनिस्ट्रेशन केमति हबो, ताको कंट्रोल केमति करा जिवो, कोन कोन प्रोविजन निया जिवो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स. This talk about in the schedule 5. Then in the 6th schedule there is a provision related to the administration of tribal area. Tribal area रो administration ପାଇଁ कौन कौन provision निया जिवो ता विषय होछि. Mention important tribal area, there is a 4 tribal area: Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Talk about tribal area, but schedule 5 talk about schedule area and schedule tribe. Confuse होबनी, that is schedule area, schedule tribe, and 6th is the tribal area. So generally चारटा स्टेट विषय से कहूची असम, मेघालय, त्रिपुरा and मिजोरम. असम, मेघालय, त्रिपुरा and मिजोरम. The 7th schedule most important schedule, it is division करा है state list, central list and concurrent list. Particular state के subject list law बनेइबो, state center के subject law बनेइबो, and the concurrent list जेटी कि both state और center के subject law बनेइ परिबे. तो टोटल सब्जेक्ट जंती यूनियन लिस्ट केटा सब्जेक्ट अछि, टोटल 98 सब्जेक्ट अछि. ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थिला. सेबेला स्टेट लिस्ट रे 59 सब्जेक्ट अछि, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थिला. एंड इन द कंकरेंट लिस्ट देयर इज 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनली इट इज 47 सब्जेक्ट. तो सेंटर यूनियन लिस्ट ओनली डिड टॉक अबाउट द यूनियन. यूनियन के जिनसे लॉ बनै परिबो, के वे रे यूनियन लॉ बनै परिबो, सेटा हला यूनियन लिस्ट. तो 98 सब्जेक्ट होजी यूनियन लिस्ट रे. सेमती स्टेट लिस्ट जेडी स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जेडी बनै परिबो ता लॉ बनै परिबो, दैट इज 59. एंड द कंकरेंट लिस्ट जेडी बोथ स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट ताको हिसाब रे लॉ बनै परिबे, इंप्लीमेंट करि परिबे, दैट इज इन द 52 सब्जेक्ट. टोटल 52 टा सब्जेक्ट अछि. प्रीवियसली इन ओएसएससी सीजीएल दे पचारि सरछि जे एई सब्जेक्ट टा डिफेंस टा
के लिस्ट रे आसुची सेंट्रल लिस्ट रे आसुची कि स्टेट लिस्ट रे आसुची कि कॉन्करेंट लिस्ट रे आसुची बैंकिंग के लिस्ट रे आसुची तो एठी डिफरेंट लिस्ट हमको जानिबा पड़िबो मिनिमम किछि किछि so that we can answer that type of question. In the 8th schedule based on the language total language विषय कहूची हमर ऑफिशियल लैंग्वेज इनिशियली देरे 14 टा किंतु वर्तमान देखले सेठी टोटल 22 टा हम ऑफिशियल लैंग्वेज अछि कौन कौन ना आसामी झला बेंगली बोडो डोंगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ काश्मीर कोंकणी मथिला मलायालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया मध्य गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज आसुची पंजाबी संस्कृत संथाली हिंदी तमिल तेलुगु उर्दू इंपोर्टेंट इंग्लिश नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रे आसु नाही तो 22 टा हमर ऑफिशियल लैंग्वेज अछि टॉक अबाउट इन द 8th शेड्यूल एंड सिंधी वाज एडेड बाय द 22nd तो अलग टोटल 14 टा थिला तो बाकी जो 22 टा हला अलग अलग डिफरेंट अमेंडमेंट रे ताको ऐड करा हिची एज ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब रे एंड सिंधी टा को ऐड करा हिची थ्रू द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली वर्ड को ऐड करा हिची थ्रू द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिमिलरली बोडो डोंगरी मथाली एंड संथाली वाज एडेड इन द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और ओडिया वाज रीनेम एज ओडिया तो जानिछ समस्ते ओडियाटा प्रथम ओडिया बोली कहउतला एबे ताको ओडिया बोली कहउछि फॉर द 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 प्रथम ताको ओडिशा बोली कहउतला एबे ओडिशा बोली कहउछि तो केबे सेटा हितला फॉर द 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 so language talks about the schedule 8 then schedule 9 schedule 9 को लेजिस्लेचर बहुत यूज करथले स्टार्टिंग रे कोन पई ना एटी शेड्यूल 9 रे किछि सब्जेक्ट रहिले सेठी जुडिशियल रिव्यू लागू हो नथिला तो बहुत लेजिस्लेचर सतळ जो लॉ बनौतले सेठी शेड्यूल 9 रे बहुत लॉ को प्लेस करथले जहा फल कि जुडिशियल रिव्यू सेठी हबनी से तो शेड्यूल 9 जनरली एक्ट एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 थिला बट प्रेजेंटली 282 केते एक्ट शेड्यूल 9 रे आसी जेहेतु जुडिशियल रिव्यू हो नथिला ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम तो स्टार्टिंग से लैंड रिफॉर्म चलता आफ्टर इंडिपेंडेंस आउ जमींदारी सिस्टम थिला ड्यूरिंग ब्रिटिश समय रे तो बहुत कहा जमींदारी पाखे बहुत जमी थिला बहुत लैंड होल्डिंग ताको पाखे अधिक थिला से लैंड सीलिंग रो कांसेप्ट आसिला तो जेहेतु भी ऑफिस प्रॉपर्टी राइट ता से फंडामेंटल राइट मध्ये थिला से रिलेटेड एटी टॉक कर तो 9th शेड्यूल टॉक अबाउट द लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट तो सही लिखा है दिस शेड्यूल वाज एडेड तो स्टार्टिंग रेटा नथिला एडेड हला थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 टू प्रोटेक्ट द लॉ इन फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू जेटा हम कहली एई लॉ रे जनरली जुडिशियल रिव्यू स्टार्टिंग रे हो नथिला तो जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट करबा पई तो एठी ऐड कर दिया होतला 9th शेड्यूल रे ताकू ऐड करा होतला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रेटा ऐड हिची 9th शेड्यूल तो एटा प्रोटेक्ट करिवो लॉ इंक्लूडिंग इट फॉर्म ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल बाकी सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यूटा तो द केशवानंद भारती केस they कहले अप्रैल 24 1976 however supreme court ruled that law included in this list after April 24 1917 now open for judicial review केशवानंद भारती पर आस्थिला बेसिक स्ट्रक्चर कांसेप्ट से देइतिले जे तमे किछि भी लॉ बनै परिबो बट इट शुड नॉट हार्म द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किछि बेसिक प्रिंसिपल अछि तो सेटा गुंती हार्म न हुए तो सेति में जुडिशियल रिव्यू जेठी एठी बंद हेइतला पूरा पूरी 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू करि परिबेनी बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट कहितले ना जुडिशियल रिव्यू हेइ परिबो तो सेटा केबेटु हबो रेट्रोस्पेक्टिव हबनी फ्रॉम अप्रैल 24 1973 परठू जहां भी लॉ बना हबो सेटा जदि 9th शेड्यूल ले भी प्लेस करा जाय तथा भी जुडिशियल रिव्यू हबो बट प्रीवियसली जदि थिला सेतरे जुडिशियल रिव्यू से केस रे हेइ पार नथले जदि किछि को 9th शेड्यूल ले प्लेस करा होचे ओके तो 10th शेड्यूल एटा मेनली डिस्क्वालिफिकेशन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यदि गुटे पार्टी गुटे मेंबर गुटे पार्टी रे जीती आ गुटे पार्टी को पळै जाउतला आ गुटे पार्टी को चेंज करतला तो सेते बेले डिफेक्शन लागू होउतला तो एटा ऐड हेतला 10th शेड्यूल ले तो सेटा को जे एंटी डिफेक्शन तो एंटी डिफेक्शन दे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दे
तो जदि गोटे पार्टी रे जीती शिफ्ट करथला अलग पार्टी को तो सेतेबेले सेठी एंटी डिफेक्शन लागुथला एटा एड केतेबेले हला 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1958 रे एड हिची एटा 10th schedule टा which talk about the defection of the member of parliament and state legislature aid hichi in the 52nd amendment 1958 also known as anti defection law. Then the 11th schedule that is talk about previously कहली talk about पंचायत तार पावर कोन रहइबो अथॉरिटी के रहइबो रेस्पोंसिबिलिटी कोन रहइबो पंचायत ता पंचायत विषय एठी डील करा होची एठी टोटल केटा मैटर अछि टोटल 29 टा मैटर अछि is added in the 73rd constitutional amendment act 1992 तो 73rd constitutional amendment 1992 रे एटा ऐड हेतला टोटल 29 टा सब्जेक्ट अछि तो 29 सब्जेक्ट से माने एक्ट बनै परिबे फॉलो करि परिबे तो डील विथ द पंचायत. Then the last is the 12th schedule. Similarly talk about the power, authority and the responsibility of municipality. Municipality रे power कोन रहइबो authority कोन रहइबो responsibility कोन रहइबो ता विषय रे टॉक होउची. तो एठी जेमति टोटल 29 सब्जेक्ट अछि इन द पंचायत सिमिलरली एठी टोटल 18 टा सब्जेक्ट अछि 18 मैटर्स अछि इन द म्युनिसिपैलिटी और इट्स एडेड हेतला थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे. ओके so this is about the schedules. Then हमें किछि क्वेश्चन देखिबा जेटिका कि प्रीवियस ईयर रे आसी पारिछि प्रीवियस ईयर किछि क्वेश्चन एई टॉपिक रिलेटेड किछि क्वेश्चन प्रीवियस रे आछि ताको हमें देखिबा केमति क्वेश्चन आसुछि आ ओएसएस सीजीएल रे एठू केमति क्वेश्चन प्रिपेयर हेई परिबो. जेमति फर्स्ट क्वेश्चन थिला हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्रथम काली क्लास रे पढ़ा हितला चेयरमैन के थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सिंपल एटा भी पचा दो हु वाज द एठी थिबो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ किछि एठी ऑप्शन देई नथिबो एसएससी जेल जेतोले दबो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से केवल एतकी पचार थिबो किछि ऑप्शन देई नथिबो तो आंसर कोन होबो हु इज द चेयरमैन इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. B.R. Ambedkar नुहे B.R. Ambedkar is the chairman of drafting committee. Drafting committee. ये ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले. सेमती नेहरू जवाहरलाल नेहरू विषय पढितला हम स्टेट कमिटी थिले यूनियन पावर कमिटी थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल द प्रोविंशियल कमिटी रो से मेंबर चेयरमैन थिले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन This philosophical postulate of Constitution of India are based on similar एमती डायरेक्ट एतकी भी क्वेश्चन पचार दबो philosophical जो फाउंडेशन अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटा केठु आसीची philosophical postulates of the constitution is based on philosophical foundation टा हमर केठु आसीची सेटा हम देखितले दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास करथिले पंडित नेहरू इन 1947 रे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेटा कि 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 रे एडॉप्ट करा हितला. तो इट इज अ मॉडिफाइड तारी मॉडिफाइड वर्जन टा तो प्रीएम्बल को आजे और कॉन्स्टिट्यूशन टा बेस्ड अछि फॉर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू. नेक्स्ट इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कोइतली सोर्सेस जो एडॉप्ट कराइतले डिफरेंट सोर्सेस रो तो हमर जो इंडियन फेडरेशन जेटा कि यूनिटेरियन कैरेक्टर बट फेडरल इन स्पिरिट बट यूनिटेरियन कैरेक्टर बोली हमें कहूचे तो स्पिरिट है फेडरल बट कैरेक्टर है यूनिटरी. तो इंडियन फेडरेशन दा बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडियन मॉडल. कनाडा मॉडल जेमती अछि कनाडा जेमती चले ताको जनरली स्टेट सेंटर टा स्ट्रांग मोर देन द स्टेट हमर भी सही बळे किछि फेडरल सिस्टम रहछि बट यूनिटेरियन कैरेक्टर रहछि यूनिटेरियन स्पिरिट रहछि. तो इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कनाडा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not the element of secular state. So secular state कहइतली द फीचर्स salient feature of the constitution हम जतल देखितले so one of the important feature is the secular state secularism. So secular state which is added in the 42nd amendment act add हेतला स्टार्टिंग रेट नथिला तो जनरली एटा प्रीएम्बल ले एड हेतला our fundamental rights से मध्ये secularism विषय मेंशन अछि so the article 25 to 28 right to religion. Then it is DPSP रे मध्ये मेंशन अछि article 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो जो सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन पछे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया. तो सिंपल एठी पचारि परबो सेक्युलरिज्म टा केबे एड हेतिला इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेक्युलरिज्म
secularism was added, or fundamental, which part of the fundamental deal with secularism? तो तो पचार दीजिए previous CGL ले, write down the note on article 25 to 28. Okay. So our answer कौन होगा? Which of the following is not the element of the secular state in India? तो secular state माने कौन? जहाँ state रो specific religion नथिबो, state सब religion को promote करथु ना कि particular one religion को follow करथुबो. इटा हम slightly different, हम different रहउची western concept of secularism रे. In western secularism there is a complete separation. काली सीटा कहथली complete separation रहिबो state और चर्च भितर. But in Indian secularism रे जदि हमें देखिबा, हम सेठी complete separation रहउनी. हमें सब religion को equal importance दिया होउची. So taxation on religious property, freedom of religion, no religious education by the state. So civil equality is not part of the secular state of India. Next, which of the following is not correct statement regarding the unitary system? So अभी कहली हमर कोन federal in character but unitary in spirit. So character federal but unitary in spirit रे unitary. से कहछि which of the not the correct statement regarding unitary system? तो जेतले unitary system हे जाय, गुटे कंट्री unitary हे जाय, तो जनरली सेंटर सब स्टेट रो जहां भी फंक्शन अछि सब सेंटर ही बुझी थाय. तो सेटा को हमें unitary system of government बोली कहछि. तो से कहछि not, एटा इंपोर्टेंट, जनरली पिला भूल कर देते, not को पढते नहीं, not is correct. So in a unitary system there is one state, one government. There is one state and one government. It is complete. It is unitary system. So it is गुटे ही state रहिबो और सेठी गुटे ही government रहिबो. There is constitutional division of power between the center and the local government. So that is one of the feature of the federal government. Federal government जेठी की different state रहिबो, different constituent रहिबे, आमो तांको different constitution रे constituent रे power टा अलग अलग रहिबो, सेग्रीगेट रहिबो, तांको jurisdiction टा समस्त सब constituent रे अलग अलग jurisdiction रहिबो. तो लगे जे constitutional division रहउची power between the center and the state. Then local body derive their power and autonomy from the central government. It also the features of the unitary features रे आछी. तो local bodies जो जति अछन से माने मध्ये power टा काढ नउछन central government. तो central government is the main authority here. So unitary feature also talk about that thing. The center सब कथा बुझियो. And the last is the unitary system is particularly suited for small country. It is also the answer of a B. Next, which of the following is not the salient feature? The question पचाची, which is not the salient feature of the Indian Constitution. So Indian Constitution the salient features टा केउटा नुहे. तो हमें previously देखले बहुत गुडी जेमति written constitution and the supremacy of the constitution. It is one of the salient feature of the constitution. Lengthiest constitution हमर कुआ जाय. असरा written constitution अछि. सेमति quasi federal structure अछि हमर. Quasi federal both unitary मध्ये features होइछि आउ federal मध्ये feature होइछि. सेति ताकू quasi federal structure बोली कहैतले. Quasi federal के कहैतले केसी हुएर बोली कहैतले. जने political scientist अछन, analyst अछन केसी हुएर. के कहैतले India is a quasi federal structure. Quasi federal structure. Then distribution of power. अभी हमें देखले एटा schedule 7 schedule ले talk about distribution of power. अलग अलग state subject, अलग center subject object and the concurrent subject. So not the feature केटा, the committed judiciary is not the feature. Is the answer. Committed judiciary is not the answer. Is the committed judiciary. Amma judiciary is integrated judiciary, not committed judiciary. It is integrated judiciary. Integrated judiciary. Amma judiciary system ta integrated. जेमति हाई प्रथम वाला district level district court, तो ताकू appeal करले high court appeal करियो, अपनी high court रो supreme court, and supreme court the highest authority. So it is integrated judiciary. Next. Which article of the Indian Constitution speak about the official language? एबे just कहली official language क्यों article ले talk होजे, direct पचा दम question in the OSSC CGL ले क्यों article talk about the official language? That is article 343. Article 343 part 17, part 18 the emergency provision, part 17 talk about official language. Then next question. Which among the following state does not come under the second schedule of the Indian Constitution? Sorry, that is a question wrong achi. Printing error satal thibo. Second nuhe, that is 7th schedule. That is 6th schedule. Is which is talk about the schedule areas. Okay, like Assam,
त्रिपुरा मिजोरम अच्छी नाही कौन आंसर कौन हम दैट इज सिक्किम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन okay the ideal of welfare state in Indian constitution is enshrined in it तो welfare state रो concept के पार्ट लिखा है छी preamble लिखा है छी ना DPSP लिखा है छी ना fundamental right और 7th schedule त काली हमें कहउतले जो welfare state रो concept state is welfare state रो concept आस्ची के तो DPSP directive principle of state policy रो आस्ची DPSP रो आस्ची welfare state तो state रो betterment ପାଇଁ किछि जति provision लिखा है छी स्टेट को बेटरमेंट केमती करा जाई परिबो डीपीएसपी जनरल दैट इंस्ट्रक्शन स्टेट को किछि इंस्ट्रक्शन दिया जाय बिफोर प्रिपेयरिंग द लॉ प्रिपेयर करिवारे किछि इंस्ट्रक्शन अछि तो स्टेट शुड फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन बिफोर फॉर्मिंग एनी लॉ तो किछि लॉ बनेबा से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिवा उचित देन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम एटा में देखिले खाली डिफरेंट सोर्सेस जो बोरो कराई त अलग अलग सोर्सेस रु तो कॉन्करेंट लिस्ट जो अछि सेटा केटु बोरो कराई छी concurrent list जो अच्छी जड़ी both सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट करि परिबे इट इज brought from the Australia next which schedule of the constitution of India distribute power between the union and state एटा power distribute के schedule ले करूची that is 7th schedule तो 7th schedule रे power distribution होची between the center and state भितरे next which of the following रिसेंट पचाची 2022-23 ओएस रे पैटर्न चेंज होला पर एबळे किछि क्वेश्चन ओएस रे पचाची जंती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेस रे ए भितरु कोटा करेक्ट द ऑथर ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज बी आर अंबेडकर इट इज कंप्लीटली रॉन्ग बी आर अंबेडकर नॉट दैट इज जवाहरलाल नेहरू Jawaharlal Nehru is the author of the resolution. So correct पचाची तो statement 1 incorrect. तो elimination भी जो देखियो statement 1 incorrect, statement 1 incorrect, 1 incorrect. So you easily got the answer that is 2 4. तो एमती भी answer दे परिबो सब statement को न पड़ी. तो correct पचाची तो first statement wrong. B.R. Ambedkar is not the author of the resolution. He is the author of Jawaharlal Nehru. तो statement 1 incorrect है गला. तो सेट में answer the D. It is 2 and 4. Second statement was correct. It was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. आसीतला केबे ना 13th December. Propose हितला 13 December 1946 रे. और सेटा पास हितला January 22, 1947 रे पास हितला. Then goal of the resolution was India was a sovereign, socialist, democratic and republic. एटा गोल थिला कि sovereign, democratic and republic. Socialist तो सेतबेले नथिला. Socialist aid हला 42nd amendment act रे. तो इट socialist word रहिबो नाही. तो इट socialist word रहिबो नाही. The question था the goal of the resolution was to declare India as a sovereign, democratic and republic. तो एटा correct हेतंदा. But it is socialist लिखिची. Socialist aid हिची 42nd amendment पे. starting रे नथिला. Then the last कहूची statement the resolution letter framed preamble. So preamble हम पढ़ितले जेंति preamble is the modified version of the objective resolution which is proposed by the Jawaharlal Nehru. So ये statement भी correct अछि. So statement 2 and 4 is correct. So then next question, which of the following statement are correct with respect to the constituent assembly? जो constituent assembly बसिला set up हला composition हला तो सेटु correct केटा wrong केटा. The Constituent Assembly was constituted under the Cabinet Mission Plan. तो Cabinet Mission Plan देंगे इटा बना इतला. So statement 1 टा correct ही गला. The total strength of the Constituent Assembly originally 369 इटा wrong. That is 389 हमें देखिए 389 the total strength होउची that is 290. That is 293 टा state रू होउची British provinces रू और 73 टा होउची princely state रू. तो सेट में statement भी correct. Correct time. So is 1 and 4 is the correct. Next. Next question बचा जल्दी. Consider the following pair in respect of the source. ये source रू के को part टा आसीची. तो सेटा से पचा जल्दी office of the governor. सेटा England source रू आसीची. हाँ आसीनी. Then the Public Service of Commission, Freedom of Trade and Commerce and the language of preamble.
हमें देखिए लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑस्ट्रेलिया रू आछि तो दैट इज द करेक्ट वन ऑफिस ऑफ गवर्नर हमें काली देखिथिले एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो आछि तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट तो स्टेटमेंट 1 जदि हमें देखिबा तो एटा कटि गला सेमति पब्लिक सर्विस ऑफ द कमीशन तो एटा केठो आछि पब्लिक सर्विस ऑफ द कमीशन it is from the government of India Act 1935 then the language of the constitution so answer is the 2 and 4 next the entry 5 of the list 2 of the 7th schedule of Indian constitution deal to it list 2 of the 7th schedule so list 2 that is state list हम देखले 7th schedule रे तीनटा लिस्ट कथा कहउची तो स्टेट लिस्ट तो स्टेट लिस्ट रे लिस्ट नंबर 5 रे एंट्री 5 रे कोनटा मेंशन तो सीता पचा देछि तो एंट्री 5 रे दैट इज द लोकल गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर इज द एंट्री 1 रे तार आंसर हो लोकल गवर्नमेंट ओके तो ये किसी क्वेश्चन थिला जेडे कि आउरी अछि लास्ट को from which constitution suspension of the fundamental right during emergency was borrowed तो इमरजेंसी समय जो फंडामेंटल राइट हमर सस्पेंड हो जाए जमती आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए एंड बट 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड 20 and 21 सस्पेंड हुए नहीं बट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए तो सेटा पचाची सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी तो इमरजेंसी में देखिए 3 प्रकार इमरजेंसी अछि नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी national emergency article 6 and 3 256 that is state emergency so eta borrow keti koraichi na that is borrowed from the Germany borrowed from the Wiener constitution of Germany so Wiener constitution of Germany ro suspension borrow koraichi semti similar pachachi DPSP directive principle of state policy to inspire of the constitution to inspire hoichi so it is inspired from Ireland inspired from Irish constitution weta aschi inspired from Ireland so ये क्वेश्चन अछि जेटा कि OSSC CGL ले भी ये डायरेक्ट पचारि परिबो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंस्पायर्ड बाय कार्ड से इंस्पायर्ड हेछि ओके आई थिंक so this is all about the constitution केमती प्रिपेयर हैला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थिला एंड के टू सोर्स टू डिफरेंट सोर्सेस टू केमती बोरो करा हिची पार्ट्स केते रहिची एंड शेड्यूल केते रहिची ता रिलेटेड किछि क्वेश्चन जेटा कि सिमिलर क्वेश्चन टाइप रो जेटा कि ऑप्शन नथिबो ए भला किछि आसी पारिबो नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट टॉपिक को जिबा दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल विषय में देखिबा तो प्रीएम्बल माने कौन द प्रीएम्बल इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड जमती कॉलेज बा स्कूल जमती आइडेंटिटी कार्ड मिलछि दे बेसिक इन्फॉर्मेशन थाय सेहि भले हम प्रीएम्बल ले बेसिक इन्फॉर्मेशन अछि अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन विषय में बेसिक इन्फॉर्मेशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन द सोर्स कोन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी किए मेन अथॉरिटी किए कॉन्स्टिट्यूशन देला किए हमको हम इंडिया रो फीचर्स केमती इंडिया रे कोन कोन फीचर्स अछि हमें कोन फ्यूचर पई कोन सिक्योर करबा को चाहू छे आउ केबे एटा एडॉप्ट हेइतला तो ये डिफरेंट जिंस हम प्रीएम्बल ले मेंशन अछि तो देखिबा तो प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द बेस्ट सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाटू आसीची प्रीएम्बल देइछि कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन देइछि कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आमे ही हमको कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करिचे हम पई कॉन्स्टिट्यूशन आउ के देइने वी प्रिपेयर करिचे कॉन्स्टिट्यूशन को हैविंग solemnly resolved to constitute India into a इंडिया को केमती हमें कॉन्स्टिट्यूट करछु एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तो पांचटा फीचर्स अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रा कौन कौन फीचर्स अछि हम सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक अब हमें कौन सिक्योर करबा को चाहू छे एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन कौन सिक्योर करते चाहू छे प्रथम दैट इज जस्टिस कौन सिक्योर करते चाहू छे जस्टिस दो प्रकार जस्टिस ना सोशल लेवल भी जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देन नेक्स्ट वन इज लिबर्टी कौन थॉट तुम चिंताधारा लिबर्टी थबा तुम किछि भी चिंता
करि परिबो केही भी तुमको बाध्य करि परिबेनी तुम एक्सप्रेशन किछि भी एक्सप्रेस करि परिबो किछि भी बिलीव करि परिबो फेथ रखि परिबो एंड वर्शिप करि परिबो कहानी को चाहिले तुम दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस योर इंडिविजुअल कॉन्साइंस so that is a liberty means freedom your freedom तुम कोन कोन करि परिबो freedom of thought रहिबो एक्सप्रेशन रहिबो बिलीव रहिबो फेथ रहिबो एंड वर्शिप रहिबो देन थर्ड सिक्योर करिबा कोन ना इक्वालिटी कोन ना इक्वालिटी ऑफ स्टेटस समस्तर इक्वल स्टेटस रहिबो रिच एंड पुअर डिवाइड ता जत्ते परिबा कम करिबा एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा एवरीवन टू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस्ड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और क्लास ऑफ बर्थ किछि रे डिस्क्रिमिनेट न करी समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा आ इक्वल स्टेटस दबा एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्रेटर्निटी दैट इज ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी assume the dignity of individual समस्त भितर डिग्निटी को मेंटेन करिबा से रिच हो कि पुअर हो एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आ मेंटेन करिबा देश रे यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करिबा एकता बनाए रखिबा तो इटा हमें सिक्योर करते चाहू चारटा कोन कोन सिक्योर करते चाहू छे justice liberty equality and fraternity justice social economical political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status opportunity and promote among them all fraternity assuring the dignity of individual and unity integrity of the nation so the constitution ta adopt eta काली हम देखले adopt of commencement enforcement adopt केबे हितला ना 26th November 1946 so in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 26 November 1949 we do hereby adopt enact and give to ourselves ame निजको देइछे this constitution ए constitution ता ame निजको प्रोवाइड कराइछि तो केबे एडॉप्ट कराला ना 26 नवंबर 1949 but enforcement date is the 6 January 1950 so this is preamble so preamble हमें जन पढिबा कोन this is the basic objective a component of the preamble different component कोन अछि preamble ले significance of the preamble what are the different keywords that are mentioned in the preamble like these are justice कोन equality कोन liberty कोन तो विषय basic idea नबा and the Supreme Court case related to preamble whether preamble is a part of the constitution or not whether we should amend the preamble or not this is the basic question that asked तो ता विषय में देखिबा then प्रथम तो सेटा प्रीवियसली जेटा कहितली एटा कोन ना हम जो preamble दा it is based on objective resolution which is passed by the Pandit Nehru ebe 22nd January 1947 रे adopt हला तो हम preamble ले तीनटा नुवा वर्ड ऐड हेछि amendment only once हम preamble थोरे ही आज पन amend हेछि by 42nd constitutional amendment 1976 रे कोन वर्ड ऐड हेछि socialist secular and integrity socialist secular and integrity तो जनरली तीनटा वर्ड 42nd constitutional रे ऐड हेछि लेटर तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय तो जेमति कहितले एटा किए कहितले एनए पाइखे वाला कहितले पालखी वाला कहितले एनए पाइखे वाला कहितले कॉन्स्टिट्यूशन preamble is like an identity card of the Indian constitution क्वेश्चन पछारिबो who said that preamble is the identity card of the Indian constitution that is एनए पालखी वाला तो preamble is neither source of power एटा काहरी को पावर दोउनी कि not prohibition of the power of the legislation एटा काहरी पई पावर से जे सोर्स मध्ये नहुए कि काहरी को पावर को लिमिट मध्ये करूनी काहरी पावर को से लिमिट करूनी कि काहरी पावर को जे सोर्स हिसाब रे काहरी पावर रो नुहे एनफोर्स करूनी इट इज नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन एनफोर्सेबल एटा जस्टिसेबल होई परिबनी माने सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबनी किछि जदी एटी फंडा ठीक से फिल अप न हुए जहां भी एटी प्रोविजन मेंशन अछि जहां भी लिखा है जदी ठीक से न हुए तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई मध्ये परिबनी इज नॉन एनफोर्सेबल मध्ये किछि भी लॉ बना जाई परिबो नाही It was enacted by the Constitutional Assembly after the rest of the Constitution. जब पूरा Constitution prepare ही गला, तापर ही एटा को prepare ही थिला was already enacted to ensure the conformity of the Constitution. Last, एट जो लिखा है कि we the people of India जेटा कि देखे कहली प्रथम we the people of India starting रे ही आरंभ रे लिखा है कि आमे हमको ही Constitution देछि एटा कोन एम्फसाइज करछि that Constitution is made by Constitution तैयारी हिछि and for the Indian people made by India made by and for the Indian people या पई तैयारी हेछि इंडिया लोक माने इंडिया पई एटा को तैयारी करजंती
नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल प्रीएम्बल कंपोनेंट कौन रहुची हां चारटा मेन कंपोनेंट रहुची जेमति मु कहितली कौन ना सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन द सोर्स ऑफ अथॉरिटी पार के टू अथॉरिटी किए हेड किए कॉन्स्टिट्यूशन द हेड इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया we the people of India we that is people of India is the source of authority आसी जी के पार देला के तंकु कॉन्स्टिट्यूशन बडे ना हमें देइछे we the people of India हम नेचर ऑफ द स्टेट केमती पांचटा कहितली दैट इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये द फाइव नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट they justice liberty equality and fraternity these are the four objective that is justice liberty equality and fraternity date of adoption 26 November 1949 26 November 1949 is the date of adoption then the different key words in the preamble जगह में देख ले तो माने कौन खबर टिके टिके देखिबा डिटेलली तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉवरेन सॉवरेन प्रथम वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तो फर्स्ट वन इज द सॉवरेन सॉवरेन मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट काहरी ऊपर हमें डिपेंडेंट नुहे हम लॉ बनेबारे लॉ मेकिंग करे किछि भी एग्जीक्यूशन रे हमें काहरी को डिपेंड करूने किछि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड को डिपेंड करूने वर्ल्ड ऊपर हमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट निज हिसाब रे हमें लॉ बनै परिबा फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी रो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट रहिबो नाइदर ए डोमिनियन नॉर डिपेंडेंसी ऑफ एनी स्टेट काहरी डोमिनियंस किबा हमें डिपेंडेंट नुहे हमें कंप्लीटली सॉवरेन डिपेंडेंट पार्ट रहू then socialist India is a socialist country there is a welfare concept the socialist ta borrow kara hitla from the socialist ta aid hela starting re no thila so the 42nd constitutional amendment act aid hitla in 1976 तो amar Indian socialism ta gujara koha jaye amar democratic socialism boli koha jaye to socialism generally blend of Marxian concept socialism is a concept of the Marxian philosophy that is welfare state ko partyless democracy kotha koha jaye socialism रे betterment of the lower class of the society so rich and poor division नथिबो तो जनरली इट मार्क्सियन कांसेप्ट बट हमर जो सोशलिज्म ब्लेंड ऑफ मार्क्सियन एंड द गांधीयन बोथ रो ब्लेंड ता मार्क्सियन सोशलिज्म एज वेल एज गांधीयन सोशलिज्म रो ब्लेंड ता तो हमर जो सोशलिज्म ता कोन को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो दी मेन एम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म माने कोन द पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इगा सब को एंड करबा poverty no jemti no rahibo ignorance no rahibo disease no rahibo inequality opportunity and the mixed economy that is both private as well as the government equally participate kari paribe for developing the economic sector so next secular so ye kon 42nd amendment add hichi it is one of the basic structure of the constitution जेरा को हमें चेंज करि परिबा नै बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेरा को कहि भी ताको लॉ द्वारा एक द्वारा ताको चेंज करि परिबा नै इम्प्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल जेरा को प्रथम कहितली तो प्रीएम्बल इन मेंशन अछि और इम्प्लिसिटली मध्ये मेंशन अछि आर्टिकल 25 टू 28 दैट इज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे मध्ये एटा मेंशन होइछि आर्टिकल 25 टू 28 दैट इज सेक्युलरिज्म देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट फीचर इज द डेमोक्रेटिक तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन हमें केमती स्ट्रक्चर केमती हमर डेमोक्रेसी चलछि दैट इज लोकतंत्र डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी हमें प्रति 5 वर्ष रे थरे इलेक्शन होउछि और हमें जे माने भी 18 वर्ष ऊपर अछंती से माने वोट करछन तांको गवर्नमेंट हमें निजे हम गवर्नमेंट प्रिपेयर करछि एज ए रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे हम तांको पठाउछे तो सेटा को हम जो डेमोक्रेसी टा इज द पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर कहा पाखरे रहउछि पीपल पाखरे रहउछि पीपल चाहिले कहा को भी राजा को नहीं परिबे तो सुप्रीम पावर कहा पाखरे रहउछि पीपल पाखरे रहउछि 25 वर्ष रे इलेक्शन होउछि इलेक्शन में जहाँ को चाहिए चेंज करी पारिबा गवर्नमेंट जदि हम पर्टिकुलर के गवर्नमेंट को पसंद होनी तो ये ऑटोक्रेसी मेंटेन होबनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही लॉ नुहे एठी लोक माने जेमति चाहिए से हिसाब रे लॉ प्रिपेयर हो so it is the part of the doctrine of the popular sovereignty so it is generally हम representative type of parliamentary democracy को follow करा जाए हमें जनरली जोन को बाछु जे कि हमरो रिप्रेजेंटेशन करे इन द पार्लियामेंट तो सेति ताको रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोली को जाए तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डिफरेंट काली कोइतली दे डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जेटी कि एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल न थाई बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू द
लेजिस्लेचर ये भी एग्जीक्यूटिव थी प्राइम मिनिस्टर थी बट ये भी काउंसिल मिनिस्टर थी रेस्पॉन्सिबल हेबे टू द लेजिस्लेचर मेंबर सहित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रे जदि सेठी मेजॉरिटी से माने किछि भी आनंति लो जदि सेटा मेजॉरिटी न रुए तांकर से माने इजीली से माने को बाहर कर देई पारी बे लेजिस्लेचर देन बेनिफिट हम इंडियन डेमोक्रेसी रे कोन ना डेमोक्रेसी केमते हम जानु छे ना हमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अछि जे भी 18 वर्ष रो अधिकार से वोट देई परिबो इट इज यूनिवर्सल रहिबो तारी को डिस्क्रिमिनेट करा जीवनी ऑन द बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट प्लेस और किछि बेस रे डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबो नाही डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबो नाही देन पीरियडिक इलेक्शन प्रति 5 इयर्स रे इलेक्शन होउची देन रूल ऑफ लॉ हम कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऊपर केही भी नाही बोथ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट केही भी लॉ ऊपर नहंती रूल ऑफ लॉ रहउची independent रहउची ऑफ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड नेक्स्ट फीचर इज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन जमती एटा डेमोक्रेटिक कोन पॉपुलर सॉवरेनिटी लोक पाखे पार होची एटा कोन सॉवरेनिटी रहउची इंडिपेंडेंट कोन रो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जति भी पॉलिटिकल ऑफिस रहिची सेटा समस्त को इंडिपेंडेंट खोला रहिची समस्त पई से इक्वली पार्टिसिपेट करि परिबे जति भी पॉलिटिकल ऑफिस रहिची सेटा के भी पर्टिकुलर पई सिलेक्टिव नुहे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलुची मींस एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास टू द ऑल पब्लिक ओपन टू ऑल जति भी पब्लिक ऑफिस अछि समस्त पई ओपन से प्राइम मिनिस्टर होंतो कि प्रेसिडेंट होंतो हाईएस्ट अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट हले मध्य समस्त पई ओपन कहारी को मध्य हम डिस्क्रिमिनेट करि परिबा नाही ऑन द बेसिस ऑफ किछि भी बेस रिलीजन कास्ट किछि बेस हम डिस्क्रिमिनेट करि परिबा नाही तो जनरली टू कैटेगरी रो थाय रिपब्लिकन गुटेला मोनार्कियल सिस्टम ऑफ रिपब्लिकन थाय एंड गुटेला रिपब्लिक थाय जति मोनार्किकल सिस्टम इज द इन ब्रिटेन ने फॉलो करा जाय एंड द रिपब्लिक नाम सिस्टम इंडिया और यूएसए रे फॉलो करा जाय जेठी कि मोनार्कियल जमती यूएसए ब्रिटेन ने मोनार्कियल सिस्टम तार जे हेड अछि प्रेसिडेंट अछंती से कंप्लीटली सब दिन पे रहबे मोनार्कियल हेरिडिटरी पोजीशन जने रहिला से किंग्स चार्ल्स रो ताकर 14th नंबर जमती एबे अछंती तो सेही बेले ताकर 1 2 3 14 नंबर कोन तो रहिबे मोनार्कियल बट इंडियन रिपब्लिकन इज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मध्य इनडायरेक्टली प्रति 5 वर्ष रे इलेक्टेड होउछंती नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होउछंती तो रिप्रेजेंटेटिव आमे जाको बाछि जे रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे तो से माने लास्ट पुनी बाछुछंती अब आर्टिकल 54 और 55 एटा मन रखि परिबो डील्स विथ द इलेक्शन एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट डील्स विथ आर्टिकल 54 to 55 is the republican form of government then justice एटा हमें एंश्योर करबा ऑब्जेक्टिव कोन हमें जस्टिस दबा बहुत सोशल लेवल रे पॉलिटिकल लेवल रे इकोनॉमिक लेवल रे तो ये जो जस्टिस रो कांसेप्ट है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस दबा एटा आसी जे केठो दैट थ्रू द रूसियन रिवॉल्यूशन 1917 जो रूसियन रिवॉल्यूशन थिला तांकर मेन मोटो थिला जस्टिस प्रोवाइड करबा रूसियन रिवॉल्यूशन जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हमें कहितो तो रूसियन रिवॉल्यूशन रो मेन मोटो थिला प्रमोट करबा जस्टिस प्रमोट करबा दैट इज इन 1957 both social, political and economical. Embrace distributive justice including social, economical and political justice. Social justice provide करिबा distinction होबनी based on caste रे कि religion based रे distinction किछि रहिबनी समस्त को इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करिबा जेमति रिच एंड पुअर डिवीजन ता कम रहिबो इकोनॉमिक जेमति ऑक्सफर्म इनइक्वालिटी रिपोर्ट में देखुचे कि रिच एंड पुअर भितर डिवाइड बहुत बढ़ी गलानी किंतु सेही डिवाइड ता कम करिबा दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव देन पॉलिटिकल जस्टिस तो एटा पॉलिटिकल जस्टिस ता प्रोवाइड करा होची माने समस्त इक्वली पार्टिसिपेट करि परिबे इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस रे देन liberty of thought, expression, belief, faith and worship. In liberty मतलब freedom. तुम निज हिसाब से किछि भी करि परिबो ता माने नुहे आतंकवादी होबो किछि भी करि परिबो मींस जेटा कि सोसाइटी को सुइटेबल हो थिबो ए जो लिबर्टी रो कांसेप्ट बरो करा हितला फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट इज 1789 तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 रे आस्थिला जेटी मोनार्कियल सिस्टम ता चेंज हला तो से फ्रेंच रिवॉल्यूशन रु एटा बरो करा हिची कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी कौन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप थॉट लिबर्टी रहिबो एक्सप्रेस करिबार लिबर्टी रहिबो बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप दैट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट दी एक्टिविटी किछि भी एकदम एक्टिविटी रे रिस्ट्रेंट करा जाय परिबोनी बाधा लगा जाय परिबोनी एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट देन इक्वालिटी नेक्स्ट हमर ऑब्जेक्टिव कोन इक्वालिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिबा इक्वल स्टेटस देबा समस्त को दैट इज इक्वालिटी समस्त
जमती गवर्नमेंट डिफरेंट रिजर्वेशन प्रोविजन आनी एससी एसटी कम्युनिटी हो कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससीबीसी डिफरेंट प्रोविजन आनी तो प्रोविजन टा कौन ना ये इक्वल पोजिशन आने किसी प्रोविजन दिया आम एफर्मेटिव एक्शन बोली कही था इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्वालिटी तो सिक्योर द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आम इक्वालिटी बहुत स्टेटस रे दबा आउ अपॉर्चुनिटी रे दबा समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करबा जंती एम्प्लॉयमेंट में सब एम्प्लॉयमेंट पकई करूचे एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कहीं को भी स्पेशल प्रिविलेज दिया जीवो नहीं और तीन प्रकार इक्वालिटी अच्छी जनरली हमर सिविक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द इकोनॉमिक इक्वालिटी तो सिविक इक्वालिटी बेस्ड ऑन द आर्टिकल 14 टू 18 हमर जतकी फंडामेंटल राइट मेंशन अछि जेटी ताको हमें सिविक इक्वालिटी बोली कहिता पॉलिटिकल इक्वालिटी पॉलिटिकल ले इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो इक्वल प्रिविलेज स्टेटस मिलिबो पॉलिटिकल ले आर्टिकल 25 एंड 26 एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल 39 दैट इज डीपीएसपी तो सिविक इक्वालिटी 14 कौन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समस्त लॉ सामने समान इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समस्त लॉ रे इक्वल प्रोटेक्शन मिलिबो और लॉ सामने समस्ते समान से प्रेसिडेंट होंतु प्राइम मिनिस्टर होंतु रिच होंतु या पोर होंतु दैट इज आर्टिकल 14 लाइक सिमिलरली आर्टिकल 15 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ए पांचटा ग्राउंड रे काहे को डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबो नहीं रे किंबा रेस रे कास्ट सेक्स रे किंबा प्लेस ऑफ बर्थ रे काहे को डिस्क्रिमिनेट करि जाई परिबो इट इज टॉक अबाउट इन आर्टिकल 15 सिमिलरली आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी दबो इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे समस्त को इक्वली जेमती समस्त पार्टिसिपेट करि परिबे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिवो फ्रॉम द आर्टिकल 16 सिमिलरली आर्टिकल 17 टॉक अबाउट द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी प्रीवियस रे थिला हमर ब्रिटिश समय रे और बिफोर द इंडिपेंडेंस जो अनटचेबिलिटी सीवियर अनटचेबल थिला हरिजन हो अलगा कम्युनिटी ऊपर अनटचेबल थिला ताको हमर एबोलिशन करबार थिला इट इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू द आर्टिकल 17 देन एबोलिशन ऑफ डिफरेंट टाइटल्स जेमति महाराजा राजा जहाज जो अलगा अलगा जो टाइटल आगु दिया जाउतला ताको सब एबोलिश करी दिया गला समस्त को जे इक्वल पोजीशन रे रखिबा पई केही भी एठी राजा नहांती केही भी एठी गरीब नहांती एवरीवन इज इक्वल so that is talk about the civic equality in the fundamental right from article 14 to 18 then political equality no one is ineligible for inclusion of electoral roll on the ground of religion समस्ते electoral roll रे participate करि परिबे समस्ते छिडा होई परिबे ताको निज constitution दे discrimination करा जाय परिबनी religion race caste और sex basis रे कारि को discriminate करा जाय परिबनी it is talk about article 325 Similarly, Article 326 that is Lok Sabha and the State Assembly election based on adult franchisee, universal adult franchisee based election above Article 326. Then economic equality that is Article 339 equal right to adequate means of livelihood and equal pay for equal work. That is important. जेमती काम करिवो जतकी काम करिवो सबकी वर्क मिलिबार अछि बोथ मेन एंड वुमेन डिफरेंशिएट रहइबोनी जे मेन को अधिक मिलिबो एंड वुमेन को कम जेमती काम सही हिसाब रे इक्वल पेमेंट रहइबो बोथ मेन एंड वुमेन वन को दिस इज टॉक अबाउट इन द आर्टिकल 39 then fraternity then next important feature is the fraternity ensure brotherhoodness एकता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को सह करछि मेंटेन करबा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन व्हिच इज added in the 42nd aid unity provide a sense of brotherhood ensure the dignity of individual dignity rahibo both men and women ro and unity and integrity of the nation jemti ekata bani rahibo dignity of individual is ensured by the fundamental right re madhya achi UPSC रे and fundamental duties रे madhya mention achi आउटा हमर unity and integrity एडे रही छी 42nd amendment act 1947 एटा आइदर कटि जाई छी that is 42nd amendment act रे एड छी integrity the term of integrity added in the 42nd amendment act next is a different supreme court judgment so ये judgment different supreme court judgment को आई is a part of the constitution or not or should we amend or not जेमती फर्स्ट जजमेंट आस्थिला 1960 रे that is बेरुवरी यूनियन केस तो सेठी से कहितले जे preamble is not the part of the constitution preamble constitution रो पार्ट नुहे बोली से कहि दैथिले केठी ना बेरुवरी यूनियन केस लेटर ऑन केशवानंद भारती केस रे ताकू रिजेक्ट कर दिया गला यूनियन बेरुवरी यूनियन केस ताकू एंड द से कहितले जे preamble is the part of the constitution and can be amended but must not destroy the basic feature of the constitution तो ए केशवानंद भारती
केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एटी कांसेप्ट फर्स्ट कांसेप्ट आस्थिला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल रो फर्स्ट कांसेप्ट आसीथिला जेटी कि केही भी चाहे पार्लियामेंट चाहे किछि भी लॉ बनै परिबे किछि भी लॉ एनेक्ट करि परिबे ऑन एनी टॉपिक बट दिस लॉ शुड नॉट हार्म आवर बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सेटा केशवानंद भारती केस रे कहले जो प्रीवियसली यूनियन बराबरी यूनियन कहथिले जे प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रथम कहले प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शुड नॉट हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन then LIC of the Indian case similarly se madhya seita कहले जे preamble is a integral part of the constitution these are the three act so question pachaparen which act the it is said that preamble is the part of the preamble is the integral part of the constitution it is the LIC of India case 1995 okay this is the preamble different provision of the preamble and the Supreme Court judgment keyword of the preamble कौन different keywords होइछि ता विषय देखिले next हमें टॉपिक को जिबा that is state and union territories state and union territories जेकी हम schedule 1 ने मध्ये मेंशन अछि name of the state and its territorial jurisdiction and name of the union territories and its territorial jurisdiction okay so state and union territories starting from article 1 to 4 रे generally deal करछि article 1 कोन कहउछि the name and territory of the union article 1 generally नाम और territory of the union विषय रे कहउछि जेंति article 1 नाम कोन इंडिया that is भारत article 1 name of the country अछि कोन हमर dual name that is India that is भारत जो रिसेंटली जो चलछि झगड़ा चलथला जे आम देशर नाम इंडिया ना भारत तो आम देशर नाम ही दुईटा इंडिया भी भारत भी कौन पे ना लिखा है इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 ने मेंशन ही होछि सेटा जे इंडिया दैट इज भारत इंडिया ही भारत और भारत ही इंडिया so that is the article 1 name of the country particular आम देशर कंट्री नाम कोन एंड article 2 deals with the article 2 deals with the parliament to admit new state in the union or establish a new state it generally confused पिला माने बोलती article 2 and article 3 article 2 रे new state add होबो article 2 रे नुवा state को हम state list हम state भितरे add करि परिबा हम union भितरे union of India भितरे union of state भितरे बाहर किछि state को हमें add करि परिबा but article 3 talk about the changing internal restructuring हम निज स्टेट रे जहां अछि स्टेट को केमती रिस्ट्रक्चर करि परिबा तार नेमिंग रे चेंज हला तार बॉर्डर स्ट्रक्चर रे चेंज बॉर्डर को छोटो बटो करिबा तो एटा में स्ट्रक्चर को चेंज करि परिबा स्टेट को में डिवाइड करि परिबा भांगी परिबा जदी गुटे बॉर्डर स्टेट अछि तो डिवाइड करी दुईटा तीनटा स्टेट रे डिवाइड करि परिबा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पाई so that is talk about the article 3 but article 2 admission of new state अलगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन article 3 it लिखा है internal restructuring करिबा of the existing state not the new state नुहे that is existing state जेटा अछि ताको हम restructure करिबा of the union of India redrawing the state boundaries creating new states नुवा state बनेबा redrawing करिबा ई सब करिबा तो आरो प्रपोजल पार्लियामेंट रे आसीबा आगरु एटा रिकमेंड के करिवे ना प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एटी मोस्ट दरकार हिताय प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दरकार होता है जदि भी आइदर रीड्राइंग करने चाहूँ स्टेट बाउंड्री को फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और फॉर एनी रीजन और क्रिएटिंग न्यू स्टेट करते चाहूँ और अल्टरिंग करबा तार एरिया को छोट बड़ करिवारे किबा बाउंड्रीज को और द नेम ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट जदि हम नेम चेंज करते चाहूँ तो प्रथम तार रिकमेंडेशन किए देबे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देबे देन प्रेसिडेंट ताकू पठेबे कहा स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को पठेबे जार नाम किबा एरिया चेंज होउची तो स्टेट गवर्नमेंट तार किछि पॉइंट ऑफ व्यू रखिबो बट प्रेसिडेंट नॉट बाउंड से पॉइंट ऑफ व्यू रे प्रेसिडेंट बाउंड नो स्टेट गवर्नमेंट चाहिले देबो तो पॉइंट में तो देई पारे बट बाउंड नो पार्लियामेंट फॉर न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ द नेम ऑफ द एक्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट तो स्टेट लेवल रो कि कंसेंट रो आवश्यकता नहीं बिना ता कंसेंट रे मध्य से एक्ट को पास करि परिबे दैट्स मीन हमें एटी कोन जे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज नॉट गारंटेड तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ता हमर गारंटी नुहे पर्टिकुलर जो टेरिटोरी एरिया टा इंडिया जो एरिया टा सेटा गारंटी नुहे टेरिटोरी जो इंटीग्रिटी अछि इंडिया रा
तो इंडिया रो टेरिटोरियल जो जतकी भी स्टेट अच्छी स्टेट लेट से एटा ओडिशा हला आंध्र प्रदेश हला तेलंगाना हला जो स्टेट अच्छी तार टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किछि नाही स्टेट को चाहिए हमें भांगी पारिबा मझिरो ताको भांगी करी एटा को गोटे स्टेट एटा को गोटे स्टेट तो अलग स्टेट रो दियो हमें नाम चेंज करी पारिबा तो द आर्टिकल 3 रे तो ता प्रथम स्टार्टिंग रे प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दरकार देन प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन को स्टेट को पठेबे बट स्टेट रो रिकमेंडेशन से बाउंड नुहे स्टेट रो रिकमेंडेशन जहां भी हो पार्लियामेंट जदी चाहिबो चेंज करबो तो चेंज करि परिबो तो सेति भी कहा जाय इंडिया को डिस्क्राइब करा जाय एज एन indestructible union of destructible state हम यूनियन जो इंडिया जे यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को भांगी परिबा नहीं सेटा indestructible बट स्टेट को हमें भांगी परिबा स्टेट को हमें भांगी परिबा स्टेट को destructible बट इन यूएसए जदी हमें देखिए यूएसए रे कोन को indestructible union of indestructible state एटी यूनियन और स्टेट बोथ indestructible दुईटा को भांगी परिबा नहीं कोन बाय ना फेडरेशन ऑफ स्टेट हम जंती यूनियन ऑफ स्टेट अछि USA that is Federation of State. USA it is Federation of State. Various state मिसी करी स्टेट बहुत स्टेट एकजुट हेई करी USA को प्रिपेयर करछन दैट इज द फेडरेशन तो पर्टिकुलर स्टेट को भांगी परिबे जंती हम यूनियन ऑफ स्टेट अलग अलग प्रथम भारत हला तापरे सेठू अलग अलग स्टेट डिवाइड हला बट इन यूएसए रे प्रथम स्टेट हला से स्टेट मिसी करी यूएसए को प्रिपेयर करले तैयारी हला ओके नेक्स्ट तो सिसेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट सिसेशन टू ए फॉरेन स्टेट तो आर्टिकल 368 केठी लागू हबो केठी लागू होबे जदी पर्टिकुलर हम स्टेट रो सिसेशन हो स्टेट जदी ए पार्टटा बाहरी जीवो सिसीड कर दिया जीवो तो ता पे सिसीड करिया पे हमकु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आवश्यकता पड़े आर्टिकल 368 द्वारा ही सिसेशन पॉसिबल हेई थाय पर जदी सिंपल बाउंड्री डिस्प्यूट रो सेटलमेंट हबो तो ता पे हमें किछि दरकार हुए नहीं जनरली डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार हुए नहीं पर सिसेशन जदी होउतबो जदी सिसीड होउतबो कैनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी सेतबे हमको अमेंड करिया पड़ियो 368 जेमति रिसेंट अमेंडमेंट हेइतला 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेमति 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 रे ट्रांसफर करा हेइतला किछि पार्ट को बांग्लादेश को ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश भितर एनक्लेव टाको ट्रांसफर करा हेइतला देन वेरियस कमिटी तो फॉर्मेशन होइतला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एंड यूटीज पे फॉर्मेशन पे कौन कमिटी कौन हेइतला ना धोर कमिशन आस्तिला जेपीवी कमिटी आस्तिले एंड फजलअली कमिटी आस्तिले बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक वेदर वी शुड प्रिपेयर आवर स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो लिंग्विस्टिक बेसिस रे हबो ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बेसिस रे हमें स्टेट को डिवीजन करिवा तबे अलग अलग कमिशन आस्तिले प्रथम धोर कमिशन आस्तिला से कंप्लीटली रिजेक्टेड कर देइतले स्टेट बेसिस रिऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट शुड नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ administrative convenience not on the basis of the linguistic convenience तो एटा रिपोर्ट केबे देइतले डिसेंबर 1948 रे लेटर ऑन जेबीबी कमिटी आस्तिले सी मध्ये रिजेक्ट करथिले लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट तो जेबीबी रे तीन जन मेंबर थिले जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया बट एठी फर्स्ट टाइम स्टेट बना हला लिंग्विस्टिक बेसिस रे दैट इज आंध्र प्रदेश पट्टी श्रीरामुलु जे कि स्ट्राइक करथिले 52 डे हंगर स्ट्राइक करथिले तो तांको पई सेठी बनथला देन नेक्स्ट आसले फजल अली शाह कमिटी आस्तिले ये एक्सेप्ट करले लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया बट से कहू नथिले जे वन स्टेट वन लैंग्वेज क्राइटेरिया को से रिजेक्ट करथिले वन लैंग्वेज वन स्टेट कांसेप्ट को से रिजेक्ट करथिले लैंग्वेज द क्राइटेरिया थिला बट वन स्टेट वन लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया तो एटा तयारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेइतला 1953 अब चेयरमैन थिले फजल अली अलगा आ दुजा मेंबर मध्ये थिले के एन पानीकर एंड एजन पंजरू देन सबमिटेड रिपोर्ट करथिले 1955 तो तांकरी रिपोर्ट हिसाब रे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम प्रिपेयर हेतला दैट इज 1956 रे एंड द 7th शेड्यूल रे 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मध्ये आसिला जेडी 14th स्टेट आ 6टा यूनियन टेरिटरी हला एबे जेटा कि 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ओके गाइस नेक्स्टली तापर हम नेक्स्ट क्लास रे आउ देखिबा थैंक यू।